आएगा। अगर तुम बीमार हो रहे हो तो तुम्हारी जगह पे किसी और को भेजो। जब भी हम बीमार होते हैं, जो हमारा सिक लीव होता है, नहीं, इंचार्ज नहीं देता है सिक लीव। वो बोलेगा कि नहीं मिलेगा, आपको आना पड़ेगा इमरजेंसी पे, वहाँ पे डॉक्टर से दिखाओ, एंड डॉक्टर्स अगर आपको सिक लीव दे रहे हैं, अप्रूव करे, तभी आपको मिलेगा। व्हेनेवर डे आई हैड टू टेक अ फ्लाइट, आई बिकेम सिक एंड मुझे अनफॉर्चुनेटली सिक लीव लेना पड़ा एंड आई वाज सो स्कैर्ड टू टेक सिक लीव। तो मैंने मेरे मैनेजर को अपना डॉक्टर्स का जो कंसल्टेशन शीट होता है, मैंने उनका पिक्चर भेजा एंड आई Hi everyone, welcome to my channel. My name is Alicia and I work as a registered nurse in the UK, and it's been almost 2 years that I moved from India to UK, and right now I work in the NHS. And so far my experiences has been ups and down. It's not almost very glamorous and it's not always the sunshine and the rainbows. There are days जहाँ पे हमारा वर्किंग का जो पैटर्न्स होता है, जो वर्क एक्सपीरियंस भी होता है, वो थोड़ा ऊपर नीचे होता है एंड सबका एक्सपीरियंसेस डिफरेंट है. In this video, I'm going to share my recent experience and maybe most of you all can relate as well. And it's all about toxicity in nursing department, and that is management का जो toxicity होता है हम पे, the effect of the management toxicity that it has on the nurses. So recently I went through this experience, so I thought that I would discuss in details with my nursing audience, because mostly all my YouTube audience, they all are nurses या फिर nurses का family members है. So I thought I should definitely talk about it. Those who all have been following me on Instagram, they must have known that मैं अभी 2 हफ्ते के लिए UK से इंडिया गई थी घर के लिए, because जो मेरा 2024 का annual leave था वो थोड़ा सा बचा हुआ था and I have to utilize it before it gets expired. So मैंने सोचा बेस्ट होगा कि that I will go to India. So मैंने इंडिया का फ्लाइट बुक किया and I went to India, but जैसे like I reached India, I started falling sick over and over again. जो मेरा annual leave था, most of the time मेरी बीमारी हो रही थी. I really don't know what is the reason, but I was falling sick all the time. So जो 2 हफ्ते का छुट्टी था, मैंने 3 हफ्ते बना दिया था. थोड़ा सा मैंने अपना शिफ्ट बाकी कलीग से स्वैप करके या फिर डे ऑफ डाल के मैंने 3 weeks का बना दिया था, and I had to report back on first week of March, and that's when things went wrong. So first week of March I started falling sick, मैं बीमार होने लग गई and I was not in a state to travel and go back to the UK and start my work. The day I had to take a flight, I became sick and मुझे unfortunately sick leave लेना पड़ा and I was so scared to take sick leave. तो मैंने मेरे मैनेजर को अपना डॉक्टर्स का जो कंसल्टेशन शीट होता है, मैंने उनका पिक्चर भेजा एंड आई आस्क्ड हिम फॉर लीव. सो जब उनका रिप्लाई आया, आई वाज लाइक वेरी स्कैर्ड. एंड वी ऑल नो दैट जो सिक लीव होता है वो हर एक एम्प्लॉय का अपना राइट होता है. दे हैव द राइट टू टेक सिक लीव व्हेन दे आर नॉट फीलिंग वेल एंड दे फील लाइक दे आर नॉट वेल प्रिपेयर्ड टू कम टू द जॉब, राइट? सो बट then when I was applying for my own sick leave, I was feeling so stressed, I was feeling so anxious, I was ओवर थिंकिंग. मैं सोच रही थी अब मेरे मैनेजर का रिप्लाई क्या आएगा, मेरे इंचार्ज का रिप्लाई क्या आएगा, व्हाट इज इट गोना हैव इम्पैक्ट ऑन द अदर थिंग एज वेल. वेल, इट्स वेरी पॉजिटिव दैट वी थिंक अबाउट द स्टाफिंग एज वेल, बट इफ यू कांट गो टू द जॉब, यू कांट गो टू द जॉब. इफ यू आर सिक, you are sick. There is no if and but, right? But then yes, I know it's very easy to say, but when I was in that situation, I was equally feeling anxious all the time. So मैंने जैसे करके अपना हिम्मत जुटा के I wrote an email to my manager, and जब उनका reply आया, it got me more freaked out because I felt कि the reply, I cannot like in details describe the email, but it was like, आप कब आ रहे हो, when are you planning to report back, based on that we need to cancel the services as well. Service cancel क्यों करना पड़ता है? If you guys do not know, then I work in cath lab. If you have seen my other videos as well, you can figure out that I work in cath lab. So basically I'm a cath lab nurse. So जो हमारा रोल्स होता है वो बहुत प्रिसाइज होता है, वो बहुत स्पेसिफिक होता है. वी कैन नॉट हायर एनी बैंक नर्स या फिर एजेंसी नर्स हम लेके हम रिप्लेस नहीं कर पाते, बिकॉज जो हमारा जो स्क्रबिंग पार्ट होता है, जो हमारा सर्कुलेटरी, जो हमारा रनिंग नर्स का भी जो काम होता है, इट कैन नॉट बी रिप्लेस बाय एनी अदर एजेंसी और बैंक नर्स. मोस्ट ऑफ ऑल, yes, coming to the main point, consultant. The consultant will not be happy to work with other nurses जिन पे उनको trust नहीं है. They will not work with any random nurses. They literally demand for the nurses जिन पे उनको भरोसा है, and on their feet they are right, because at the end of the day it's their patient, because उनका नाम लिखा होता है as a consultant, right? Even if I think if I were a consultant, I wouldn't randomly work with any scrub nurse, right? Because
यहाँ पे हमारा जो रोल है कैथ लैब में, इट्स वेरी इंटेंस. बेसिकली कंसल्टेंट फर्स्ट ऑपरेटर होता है एंड द स्क्रब नर्स सेकंड ऑपरेटर होता है. एंड सो द वर्क इज़ लाइक ऑलमोस्ट लाइक 50-50. सो जो इक्विपमेंट्स प्रिपेयर करना होता है, कैथेटर्स करना होता है, एवरीथिंग हमको करना होता है. एंड यू नो द कंसल्टेंट्स ब्लाइंडली ट्रस्ट अस. थोड़ा सा वो लोग विजिलेंट तो रहते हैं, बट दे डू देयर पार्ट. उनको फोकस करना होता है अपने इमेजेस पे, उनका बलून स्टैंड पे फोकस करते हैं, बिकॉज वो उनके पर दे आर रिलैक्स दैट आई नो दिस स्क्रब नर्स, आई नो शी इज ट्रेंड, शी नोज व्हाट शी इज डूइंग एंड आई कैन जस्ट डू माई वर्क. बट अगर कोई बैंक और एजेंसी नर्सेज आके उनके वहाँ पे खड़ा होगा, दे विल नॉट डू दैट. सो एट द एंड हमको क्या केसेस कैंसिल करना ही पड़ता है अगर वी आर लो ऑन स्टाफिंग. एंड इट वॉज माई बैड लक दैट जब मैं बीमार थी, माई 3 अदर स्टाफ दे वर ऑल्सो ऑफ सिक. सबका अपना स्पेसिफिक रीजन था, दे कुड नॉट कम टू द ड्यूटी एंड आई वॉजंट नोइंग अबाउट इट. बट ईमेल में मुझे पता चला कि मेरे साथ बाकी स्टाफ, मेरा कलीग भी बीमार है. एंड इट वॉज अ वेरी इंटेंस प्रेशर ऑन द मैनेजमेंट. ऑल माई एंजाइटी, ऑल माई ओवर थिंकिंग, ऑल माई, आई वॉज जस्ट कनेक्टिंग द डॉट्स एवरीवेयर एंड आई वॉज लाइक करना क्या है. एंड आई फील when I question myself that why am I feeling like that, जब मैं बीमार हूँ, जब मुझे काम पे नहीं जा सकती हूँ तो नहीं जा सकती हूँ, and it is my right as an employee to take sick leave. Then when I was questioning myself, I feel all these responses, it came from all the trauma that the hospitals, the private corporate hospitals in India, they gave me. So अगर आप नए सब्सक्राइबर हो एंड यू हैव बीन फॉलोइंग मी लाइक रिसेंटली एंड इफ़ यू डू नॉट नो मी, सो मैं आई वर्क इन इंडिया फॉर 2 years आफ्टर आई फिनिश माई कॉलेज. एंड जो 2 साल हमने कटाया है, इट वॉज लाइक हेल. एंड आई नो सब लोग, ऑल द नर्सेस हु इज वॉचिंग दिस वीडियो कैन रिलेट टू दिस थिंग. जब भी हम बीमार होते हैं, जो हमारा सिक लीव होता है, नहीं, इंचार्ज नहीं देता है सिक लीव. वो बोलेगा कि नहीं मिलेगा, आपको आना पड़ेगा इमरजेंसी पे, वहाँ पे डॉक्टर से दिखाओ. एंड डॉक्टर्स अगर आपको सिक लीव दे रहे हैं, अप्रूव कर रहे हैं, तभी आपको मिलेगा. वेन एवर इतना धूप में, इतना लाइक व्हेन यू नो द समर इन दिल्ली, राइट, जब इतना धूप है, समर है, इतना फीवर हो रहा है स्टाफ को, बट दैट स्टाफ हैव टू गो टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट. वेट करो, क्योंकि जहाँ पे इमरजेंसी डिपार्टमेंट भी होता है, दे गिव मोर, ऑफ कोर्स दे गिव मोर प्रेफरेंस एंड प्रायोरिटी टू द पेशेंट्स. एंड वो स्टाफ को बैठा रहना पड़ता है इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, कब वो द पेशेंट्स का केयर हो जाएगा, उसके बाद हमको आके देखेंगे. we'll just wait कब हमको सिक लीव मिलेगा, राइट. एंड आफ्टर दैट हमको सिक लीव मिलता था. कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि नहीं मिलता था. इफ़ हम बोलेंगे अपने इंचार्ज को, मैनेजर को कि हम बीमार है, नहीं हुआ, तो इतना डांट मिलता था. दे लिटरली यूज्ड टू स्कोर, लाइक दे लिटरली यूज्ड टू मेक अ सीन लाइक हम जानबूझ के बीमार हुआ है एंड तुम्हारा कोई हक नहीं बनता सिक लीव लेने का. वेयर एज हर एक कंपनी का पॉलिसी होता है, हमारा सिक लीव वो हमको मिलना ही चाहिए. यू कैन नॉट मेक समवन वर्क, स्पेशली मेडिकल प्रोफेशन जो इतना, I know like all professions are important, but I'm talking right now about the scenario. For example, आप भी खुद imagine करो, if you are a patient and if you're a nurse in the ICU, बीमार है, will she be able to deliver the care that which she should give? Will she able to do her work 100%? आपको भी पता है ICU में कितने critical patients होता है. The job we have to do, bloods लेना, sampling करना, documentation से लेकर सारे जो drug dilutations, infusion pumps चलाना, ventilation operate करना, ये सब चीज़ें बहुत important and critical होता है. And when someone is not in a right state of health, of course they will make errors, and this error is directly gonna impact the patient's life, right? पर फिर भी नहीं, उनको स्टाफ चाहिए ही चाहिए, आना ही है. नहीं, दे आई यूज्ड टू गेट क्वेश्चंस लाइक, अगर मैंने बोला कि मैं बीमार हूँ, आई एम फॉलिंग सिक, या फिर मुझे कुछ हो गया है, दे विल बी लाइक, तो स्टाफ कौन लेके आएगा, पहले तुम बताओ कि स्टाफ कौन लेके आएगा. अगर तुम बीमार हो रहे हो तो तुम्हारी जगह पे किसी और को भेजो. दे लिटरली से लाइक, जो तुम्हारा फ्रेंड डे ऑफ पे हो, तुमको लाइक यू नीड टू कॉल योर फ्रेंड एंड टेल हर टू रिप्लेस यू. So you know the kind of the response that we get from our in charges and manager. Imagine how can literally say like that कि तुम बीमार हो, अब तुम्हारी जगह पे कोई replacement ढूंढ के भेजो. As if it's our job. The staffing is not our job description. I'm a nurse. My job is not to find staff and the staffing thing for you just because I'm falling sick, right? But yes, अभी कहने में आसान होता था, पर back then, you know, maybe like all of you guys who is watching this channel, I used to cry. मैं रोती थी, नहीं भैया, नहीं दीदी, अब बीमार हुए तो क्या करिए. मैं भी चली जाती थी इमरजेंसी को दिखाने को. कोविड हुआ था एक टाइम को, फिर भी
I had to go to the emergency department and they literally made me wait for almost 3 to 4 hours. The toxic management को उनका क्या करना है, उनको बस staff चाहिए, जिंदा हो या मरा हो staff आना चाहिए, कोई होना चाहिए वो patient care करने के लिए. So all those things and the impact it had on my mind that it literally gave me so much of stress. मैं इतना overthink कर रही थी, मुझे लग रहा था कि अब मैं क्या करूँ. अभी मैं जाऊँगी इंडिया से यूके, मुझे पता नहीं मेरा मैनेजर क्या करेगा. वो फास्ट फॉरवर्ड अभी मैं यूके पे हूँ, मैंने मेरा शिफ्ट स्टार्ट कर दिया है 2 days में, जो थर्सडे फ्राइडे एट सैटरडे. सो आई हैव लाइक वर्क देयर ऑलरेडी. So now this is another experience that I want to share with you. First part of experience आपसे मैंने share किया and this is my experience when I spoke to my manager. So when I went ड्यूटी के लिए I was so nervous. I was literally asking my other colleague, मेरा मैनेजर कैसा है, ठीक है, वो कुछ बोला तो वो उन लोग बोल रहे थे कि तुम इतना स्ट्रेस क्यों हो, why are you taking so much of stress. They're like no, what happened over the staffing, I asked. और मैं directly भी नहीं पूछ सकती because I don't want to sound very obvious, right? So I asked what about the services, did they cancel any elective list. तो वो लोग बोले कि हाँ लिस्ट तो कैंसिल हो गया. तो मुझे और गिल्टी फील हो रहा था कि ओ माय गॉड मेरी वजह से आई कुडंट कम अप फॉर द शिफ्ट और उसकी वजह से सर्विसेज कैंसिल हो गए हैं, पेशेंट का जो इलेक्टिव लिस्ट होता है वो कैंसिल हो गया है. आई वाज फीलिंग मोर गिल्टी. एंड देन माई मैनेजर के, मैं उसको देख रही हूँ, उसने मैंने गुड मॉर्निंग विश किया, उसने मुझे बस गुड मॉर्निंग बोल के चला गया. एंड इट गेव मी मोर एंजाइटी दैट उसने कुछ बोला ही नहीं है. एटलीस्ट वहीं पर ऑन द स्पॉट मुझे डांट देता या फिर बोल देता कि तुम्हारी वजह से हमको कैंसिल करना पड़ा, तुम इतना इररिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हो, तुम बस 3 हफ्ते के लिए इंडिया गई थी, 4 हफ्ते हो गए, 1 महीने हो गए, तुम यू नो. आई वॉज एक्सपेक्टिंग ऑल ऑफ दिस थिंग बट ही डिडंट से एनीथिंग. ठीक है. एंड यू नो उससे मेरे को और ज़्यादा डर लगने लगा. आई वॉज इन अ स्टेट ऑफ फियर, आई वॉज इन अ स्टेट ऑफ एंजाइटी, स्ट्रेस, एवरीथिंग. ओके. फिर भी आई कैरिड ऑन, मैंने शिफ्ट किया एंड लेटर ऑन माई मैनेजर वाज लाइक वी नीड टू स्पीक अबाउट योर सिक लीव, ऑलराइट, बिकॉज यहाँ पे NHS से पॉलिसी होता है सिक लीव के बाद स्टाफ एंड मैनेजर का 1-to-1 डिस्कशंस होता है जहाँ पे वो लोग एब्सेंस रिव्यू करते हैं. ठीक है. So that's one of the protocol. So and I am like that kind of person, I'm very afraid of confrontation. So it came to that. अब मुझे लगा कि okay Alisha, अब होगा real thing, अब you be ready. When I went there he started taking out the documents, paper leaflets निकालने लगे and it made me more scared. मैं बोल रही कि यार मुझे ये warning letter दे रहा है, इसी का ना reprimand me, कुछ तो करेगा because मेरी वजह से services cancel हुआ है. I know it's not only because of me, बाकी लोग भी बीमार थे बट मुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता. लिटरली आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट माई सेल्फ, राइट. अब मेरी जॉब इज एट स्टेक सो आई नीड टू थिंक अबाउट माई सेल्फ. मेरी वजह से पेशेंट्स का एंजियोग्राम नहीं हो पाया है. सो आई वाज लाइक पता नहीं क्या हो जाएगा. So when I went there he started taking off the leaflets and documents but then he was fine, okay. and मुझे ये बहुत अजीब लगा. मैं बोल रही थी अब ये इतना calmly react क्यों कर रहे हैं, what's gonna come after this, is he gonna give me a surprise देके मुझे कुछ तो करेगा ये. but then nothing happened, okay. so he just asked how are you feeling now. then I said I'm feeling good, thank you. and he did ask me how do you feel coming to the work. and I said yeah I feel all right, I'm recovered. Then he goes on like are you sure. then I was like yeah. then he goes on telling me that अगर मेरा ईमेल आपको थोड़ा सा भी फियर दिया, स्ट्रेस दिया, then my intention was not like that because मैंने उनको I expressed to him that the email did make me a bit scared, worried about it and guilty at the same time, okay. keeping all things apart, I'm a very opinionated person and I stand up for myself. मैं जितना भी डर जाऊँ अंदर पे पर फिर भी I'm the kind of person I'll stand up against anyone. If I'm right, I'm gonna talk about my rights. अपना हर चीज़ I will, मुझे एक पता है कि मेरा rights क्या है as a worker. I know everything, okay. So and I fully use that. तो आई बैक ऑफ माइंड आई वाज आल्सो रेडी. अगर थोड़ा थोड़ा डांटेगा तो डांटे दूंगी, मैनेजर है. पर अगर मुझे कुछ ज़्यादा ही बोल दिया तो ऑफ कोर्स आई एम नॉट गोना टेक इट. आई एम गोना आल्सो यू नो आर्ग्यू बैक एंड स्टैंड अप फॉर माई सेल्फ. बट देन दैट मोमेंट आया नहीं, आने का ज़रूरत भी नहीं था, ओके. इट वॉज जस्ट मी बैक ऑफ माई माइंड दैट इतना कुछ सोच रही थी, ओवर थिंक कर रही थी बिकॉज ऑफ ऑल द ट्रॉमास एंड द पास्ट एक्सपीरियंसेस दैट आई हैव हैड in my entire nursing journey, right from my nursing college से लेके nursing का जो job करी थी मैं इंडिया पे 2 साल के लिए. मैंने साउथ इंडिया में भी काम किया है, नॉर्थ इंडिया में भी काम किया है. सबका
everything is the same. And मेरे जितना भी मैंने staff से मिली हूँ, जितना भी मैंने मेरे nursing friends है, circle है, everyone have had this experience and सबका story same है, and I know we all can relate to each other. So that's what got me overthinking so much. Whereas यहाँ पे it was not at all like that. उसने बोला, and this is the confrontations, the talk which we are doing, it just according to the policies of the trust, ये हमको करना ही होता है. ऐसा कि नहीं, मैं नहीं कर रही. I'm not saying that कि तुम क्यों बीमार हुए. It's not my right to say why were you sick. लोग बीमार होते हैं, ये normal है, ये चीज़ है जो कभी हम चेंज नहीं कर सकते, अनप्रेडिक्टेबल होता है. हाँ, केसेस कैंसिल हुआ है, पर we had no other options. But I'm no one to tell you why you were sick. I'm just happy that you are back. You know, those were the kind of the words that he used, and it got me so relieved. I cannot express, but it got me so relieved, and it made me feel so much lighter. He did let me know as well that I'm a very valuable asset to the cat lab. That made me feel so much positive about it. So, you know, these are the little things that I wanted to share with you guys. हमारे all the nurses, you know, we have been through this horrible phases in life जहाँ पे हमारा mentally हम इतना it has twisted and distorted our mind that we expect the worst. Okay, so in this situation also I was expecting the worst, that मेरे साथ ये होने वाला है. I was even thinking कि यार ये मेरा job ना ले ले, या फिर मुझे कहीं shift ना कर दे. As much as I feel relieved and happy that I'm working in NHS and I did not have to face the consequences जो मेरे दिमाग में मैं सोच रही कि जो मुझे face करना पड़ेगा. But at the same time, you know, my heart goes out to all the nurses because like I said, I was working in India. I have a lot of my friends, family, distance cousins जो सारे nurses हैं, and I still know that they go through this problem all over again. यहाँ पे जितना I feel कहीं पे out of India, I think nurses are respected and they have at least good pay. I know somewhere in the US जहाँ पे इतना अच्छा मैनेजमेंट नहीं है and there is a difference in the work life balance, but at least उनको पैसा तो मिलता है. The even if there's a toxicity, at least there is some money in the US. But in India, in the private sector, there is neither money, there's neither respect. So I feel it's very high time for our Indian government and Indian system to look into these things and value the efforts of the nurses, because nurses are the backbone of the hospital. That's very true. I know all the other medical professions are also equally important, but right now I'm just advocating for my nurses, so I'm going to speak about nurses. I feel ये बिल्कुल fair नहीं है कि कब जब when a nurse is sick, she is forced to work, she is forced to come for shift, जब वो खुद का ख्याल नहीं रख पा रही है, when she is sick, when she needs attention and she needs the someone to take care of her, how will she be able to go to the hospital and take care of other patients? Sadly, we all know this thing will keep going. It's like a loop, this like a never ending cycle. But then believe me when I say that all these experiences, all this, the kind of the treatment that the people give us, the management in the nursing, be it a nursing manager, be it a nursing in charges and a nursing senior, it will have an impact on your mental health. It will have a impact on your thought process, and it will carry forward with wherever you go up. मैं इतना 2 साल से बाहर हूँ, फिर भी all those fear जो मैंने सोचा था consequences ये हो सकता है मेरे साथ अगर ये कर लिया, you know, it follows and it's very difficult to heal. I always support nurses, whoever wants to switch their job and go abroad, या फिर they want to try government as well. I always say that private, अगर आपको private sector में काम करना है, you go for some other profession. Literally, I know it sounds selfish कि क्योंकि अगर सारी नर्सें चले जाएंगे तो पेशेंट का केयर कौन रखेगा. But at the same time, जब when you know that nurses, they are so important to take care of the patient, then why are you not giving respect to the nurses? आप क्यों उनका जो सेल्फ राइट का जो लीव होता है, एनुअल लीव के लिए भी हमको इंचार्ज के पीछे पीछे जाना होता है, मैनेजर के पीछे पीछे जाना होता है. इट इज़ आवर राइट. जो हमारा एनुअल लीव्स होता है, जो हमारा सिक लीव होता है, ये सब हमारा है. एंड व्हेन staff is going through hard time, it is a duty of the hospitals and other management as well to cater to the needs of the staff, right? So yes guys, that was my experience with the toxic management in the nursing profession, and I pray all the nurses, whoever is trying to go abroad for their bright future, I wish you all the best. And whoever is trying for the government sector as well, best wishes. अच्छे से आप लोग study करो, research करो and go for it. And if someone has doubt regarding UK nursing processes, you can always drop your comments below. I'm always happy to help. Yes guys, and if you haven't subscribed to my channel, subscribe to my channel and stay connected for more. Until then, bye.
है।